जय श्री माता जी। जय श्री माता जी to all. Let us bow down to श्री माता जी. श्री माता जी, आपके चरण कमलों में हम काया वाचा मनसा पूर्णतः समर्पित है। कृपा कर हमारे शरणागति को स्वीकार कीजिए। श्री माता जी, we surrender ourselves physically, mentally, verbally at your lotus feet. Please accept our surrender, श्री माता जी. Accept our surrenderness. Let us sit in front of श्री माता जी comfortably, keeping our back straight. श्री माता जी के सामने बैठ जाएंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, कितना हो सके उतना। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, श्री माता जी को देखेंगे भक्ति भाव से। लेट अस लुक एट श्री माता जी विद भक्ति एंड लव, प्रेम से। श्री माता जी को पहचानने की कोशिश करेंगे। लेट अस ट्राई टू रिकॉग्नाइज श्री माता जी who she is in our heart. श्री माता जी के चरण कमलों को देखेंगे। लेट अस लुक एट श्री माता जी लोटस फीट। श्री माता जी को धन्यवाद कहेंगे हमें चुनने के लिए। क्षमा भी मांगेंगे हमसे जाने अनजाने में हुई अनगिनत गलतियों के लिए। Let us thank Shri Mataji for selecting us for realization, making us her children. Let us ask for Kshama, forgiveness, for the mistakes committed by us, knowingly, unknowingly, uncounted mistakes. Let us keep both hands on Mother Earth. दोनों हाथ Mother Earth में रखेंगे, धरती माता पर। धीरे से आंख को बंद करते हुए श्री माता जी के चरण कमलों को हृदय में लेके जाएंगे। Let us close our eyes slowly and let us take Shri Mataji's lotus feet in our hearts. Shri Mataji. श्री माता जी के चरण कमलों में प्रणाम करेंगे, पुष्पों को अर्पित करेंगे। Let us offer flowers at the lotus feet of Shri Mataji and do pranama in the heart
श्री माता जी, आपके चरण कमलों के योग्य बनने के लिए हम सब आपके सामने ध्यान के लिए एकत्रित हुए हैं माँ। श्री माता जी, कृपा कर आज की ध्यान सत्र आप ही चलाइए श्री माता जी। आपके मार्गदर्शन में, आपके सहायता से हम आपके चरण कमलों के योग्य बन सके श्री माता जी। हम सब आपके गणेश बन सके सदा सर्वदा। हम आपके चित्त में रह सके श्री माता जी। आपके वास योग्य ये हृदय बन सके श्री माता जी। श्री माता जी, we all your children gathered together to meditate upon you and to become the worthy of your lotus feet. Shri Mataji, please run today's session with your guidance, with your help. Let us become worthy of your lotus feet, Shri Mataji. दोनों हाथ गोद में, बंधन लेंगे इस चैतन्य से। लेट अस टेक बंधन। धीरे से कुंडली माँ को महसूस करते हुए कुंडली को उठाएंगे। बंधन लेने के बाद बंधन बैठा है क्या हमारे शरीर के आजू बाजू में, चित्त से हम एक बार देखेंगे। लेट अस सी whether the kavach is settled around our body nicely or not. Through our attention, let us observe it. राइट हैंड ऑन मदर अर्थ, राइट हैंड भूमि माता पर रखेंगे, संपूर्ण इड़ा नाड़ी को देखेंगे। श्री माता जी, कृपा कर हमारे इड़ा नाड़ी में आइए माँ। हमारे इड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से चैतन्यमय बनाने की कृपा कीजिए। जो कुछ भी अशुद्धता, भूतकाल, अशुद्ध विद्याएं,
कंडीशनिंग्स, बाधाएँ हमारे अंदर हैं, उसको पूर्ण रूप से दूर करके हमारे इड़ा नाड़ी को शुद्ध, स्वच्छ बनाने की कृपा कीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, प्लीज़ कम इन अवर इड़ा नाड़ी। प्लीज़ क्लेंस अवर इड़ा नाड़ी श्री माता जी। मेक इट वाइब्रेशन चैतन्यमय। Please remove all the obstacles, all the past thoughts, all the conditionings, all type of all types of Ashuddha Vidyas, Vadas, and make our identity completely clean, Sri Mataji. लेफ्ट हैंड की हर एक उंगली को महसूस करेंगे। सभी उंगलियों में चैतन्य अंदर आ रहे हैं क्या, ये हम महसूस करेंगे। Let us observe all the fingers of left palm. Each and every finger is receiving vibration or not. मूलाधार से लेके सहस्रार तक संपूर्ण इड़ा नाड़ी को हम ऑब्जर्व करेंगे, महसूस करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व लेफ्ट इड़ा नाड़ी फ्रॉम लेफ्ट मूलाधार टू सहस्रार। राइट हैंड ऑन लेफ्ट, लेफ्ट हैंड टूवर्ड्स स्काई। श्री माता जी, कृपया कर हमारे पिंगला नाड़ी में आइए माँ। हमारे अंदर की उष्णता आदि दोषों को, अहंकार, भविष्य की चिंताओं को पूर्ण रूप से दूर करके पिंगला नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध करने की कृपा कीजिए श्री माता जी। मूलाधार से लेके सहस्रार तक हम पिंगला नाड़ी को महसूस करेंगे। श्री माता जी, प्लीज कम इन अवर पिंगला नाड़ी। प्लीज रिमूव द excess hate, ego, and futuristic thoughts from our Pingala Nadi and make it clean, Sri Mataji. श्री माताजी, हमारे चित्त को शांत और स्थिर बनाने की कृपा कीजिए। पिंगला नाड़ी में स्थित समस्त बाधाओं को कृपा कर दूर कीजिए श्री माताजी। प्लीज मेक अवर अटेंशन कूल।
दोनों हाथ गोद में। अब हम 3 महामंत्र सुनेंगे, कहेंगे खुद भी, सुनेंगे भी। उसी राग में कहने की कोशिश करेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हम मूलाधार में श्री गणेश को महसूस करेंगे। दोनों हाथों के मूलाधार, फिजिकल बॉडी मूलाधार। हम मूलाधार बन जाएंगे, गणेश बन जाएंगे, महसूस करेंगे। Let us observe Sri Ganesha in our Muladhara and in both the palms. Let us become Ganesha, awakened Ganesha. Now, let us draw one swastik in the Muladhara. अब हम मूलाधार में स्वस्तिक लिखेंगे,
Let us draw one line from back petal to front petal, प्योरिटी टू ऑस्पिशियसनेस। अब हम एक रेखा बनाएंगे बैक मूलाधार के पवित्रता से फ्रंट मूलाधार के मंगल्यता को एक रेखा डालेंगे। Now let us draw another line from left मूलाधार to right मूलाधार। और एक रेखा हम बनाएंगे लेफ्ट मूलाधार से राइट मूलाधार को। अब ये क्रॉस बन गया है। Now it is cross. Now let us make it into swastika. First of all, let us draw the petal to the front मूलाधार, auspiciousness to the right side. अब हम अगली पंखुड़ी की मूलाधार की रेखा में एक पंखुड़ी बनाएंगे, स्वस्तिक बनाएंगे। इस रेखा को राइट साइड की तरफ एक रेखा डालेंगे तो स्वस्तिक की रेखा हो जाएगा। अब हम पावित्र्यता बैक पेटल पिछले वाले पंखुड़ी की इसमें एक लेफ्ट साइड को एक स्वस्तिक की पेटल डालेंगे। लेट अस draw the petal to the back petal to the left side. Now to the right मूलाधार कार्तिकेय, let us draw the petal. अब हम राइट वाले पंखुड़ी में एक इसको जो रेखा बना के रखे हैं उसका पंखुड़ी बनाएंगे नीचे की तरफ। अब लेफ्ट मूलाधार अबोधिका की हम एक पंखुड़ी बनाएंगे ऊपर की तरफ, सामने की तरफ। Let us draw the petal for the left मूलाधार। अब हम बिंदियां डालेंगे। सबसे पहले बीचों बीच में जहां दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक गए उधर हम एक बिंदी डालेंगे। Let us put one dot in the middle where both the lines are crossed. And now upper part of the right side, one dot, and lower part of the right side, another dot. Left side lower part, another dot, and left side upper, another dot. Now it is swastika. अब हम राइट साइड के ऊपर वाला इसमें एक बिंदिया लगाएंगे, स्वस्तिक की बिंदिया, और नीचे की तरफ एक, और लेफ्ट साइड में नीचे वाले में एक बिंदिया, और लेफ्ट साइड ऊपर वाले में एक बिंदिया, क्लॉकवाइज बिंदिया डालेंगे। अब ये स्वस्तिक हो गया। इसमें जब बिंदिया डाल चुके जाते हैं तब श्री गणेश आके बैठ जाते हैं। सिर्फ रेखा में रहे तो गणेश नहीं आएंगे। हम कंप्लीट स्वस्तिक बन चुका है तो इसमें अभी श्री गणेश आए हैं। When we put dots inside this drawn lines, Sri Ganesha come and sit there. Without dots, he won't come. So now complete swastika is drawn. Let us rotate it clockwise slowly. इस स्वस्तिका को धीरे से हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की कांटे जो घूमता है उसकी दिशा में, और प्रार्थना करेंगे श्री माता जी। इधर हम म्यूजिक सुनते हुए गणेश को हम पूर्ण रूप से जागृत करेंगे। श्रीमंत जी कृपा कर हमें आपकी गणेश बनाइए मां। श्री गणेश की समस्त गुण और शक्तियां हमारे अंदर पूर्ण रूप से जागृत होने दीजिए।
हम इस स्वस्तिका को ऊपर लेके जाएंगे स्वादिष्टान चक्र में। हम आज सभी चक्रों में यही स्वस्तिका को ऊपर ऊपर लेके जाएंगे। लेट अस टेक दिस स्वस्तिका upward to स्वादिष्टाना। श्री माताजी, कृपा कर हमारे स्वादिष्टान चक्र में श्री गणेश को पूर्ण रूप से जागृत होने दीजिए। आज हम पूर्ण रूप से सुषुम्ना में श्री गणेश की स्थापना करेंगे। स्वादिष्टान चक्र में श्री गणेश को धीरे से घुमाएंगे 6 राउंड्स। लेट अस रोटेट स्वादिष्टान चक्र श्री गणेश स्वस्तिका slowly. Now let us take Shri Ganesha to नाभि, स्वस्तिका टू नाभि। अब हम स्वस्तिक को नाभि चक्र में लेके जाएंगे। श्री माता जी, कृपा कर हम सबके नाभि में श्री गणेश को पूर्ण रूप से जागृत होने दीजिए। श्री गणेश की समस्त गुण और शक्तियां हमारे अंदर जागृत होने दीजिए और स्थापित होने दीजिए। कृपा कीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, प्लीज अवेकन and establish Shri Ganesha principles and Shri Ganesha powers in our Nabhi chakra. Let us rotate Swastika in the Nabhi chakra. धीरे से नाभि चक्र में स्वस्तिका को हम घुमाएंगे। नाभि का उंगली को महसूस करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व नाभि फिंगर्स। Now let us bring this swastika to heart. स्वस्तिका को हम हृदय में लेके आएंगे। लेफ्ट हार्ट में लेके जाएंगे। लेट अस टेक टू लेफ्ट हार्ट। श्री माता जी, प्लीज अवेकन श्री गणेशा और शिव पार्वती। धीरे से घुमाएंगे। हमारे शिव पार्वती की श्री गणेश को पूर्ण रूप से जागृत होने दीजिए। राइट हार्ट में लेके जाएंगे। लेट अस टेक स्वस्तिका टू राइट हार्ट। श्री माता जी, प्लीज अवेकन श्री गणेश और श्री सीताराम। हमारे श्री सीतारामचंद्र के श्री गणेश को पूर्ण रूप से जागृत होने देने की कृपा कीजिए श्री माता जी। सेंटर हार्ट। श्री माता जी, हमारी जगदम्बा दुर्गा के श्री गणेश
अनहद के श्री गणेश पूर्ण रूप से जागृत होने दीजिए। धीरे से घुमाएंगे। विशुद्धि में लेके आएंगे। लेट अस टेक स्वस्तिका टू विशुद्धि। श्री माता जी, हमारे विशुद्धि के श्री गणेश पूर्ण रूप से जागृत होने देने की कृपा कीजिए माँ। धीरे से इस स्वस्तिका को विशुद्धि में घुमाएंगे। आज्ञा चक्र में लेके जाएंगे। श्री माता जी, कृपा कर हमारे आज्ञा चक्र में संपूर्ण मस्तिष्क में श्री गणेश शक्ति, गणेश तत्व स्थापित होने देने की कृपा कीजिए माँ। श्री माता जी, प्लीज awaken and establish Shri Ganesha in our Ajna chakra and whole brain, Shri Mataji. Let us rotate here. धीरे से घुमाएंगे। सहस्रार में लेके जाएंगे। Let us take Swastika to Sahasrara. स्वस्तिका श्री माता जी के चरण कमल है हमारे सहस्रार में। उस चरण कमलों को परिक्रमा स्वस्तिका से परिक्रमा करेंगे। Let us take परिक्रमा of Shri Mataji's lotus feet in the Sahasrara with Swastika. श्री माता जी, कृपा कर हमारे सहस्रार में श्री गणेश शक्ति पूर्ण रूप से स्थापित होने दीजिए। अब हम इस स्वस्तिका को ऊपर उठाएंगे। सहस्रार से ऊपर अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय, श्रीफला, विराट।
श्रीमती जी, सहस्रार के ऊपर के सभी चक्रों में श्री गणेश को जागृत होने की और स्थापित करने की कृपा कीजिए। हम महसूस करेंगे श्री गणेश के साथ साथ कुंडली माँ भी सहस्रार से पूर्ण रूप से ऊपर है। विराट में हम 1 मिनट इधर पूर्ण रूप से जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर जाएंगे और इसका आनंद लेंगे। मदर कुंडली Sudhar along with Sri Ganesha. Let us take to the heights up to Virata and let us enjoy the silence and these vibrations. अब हम पूर्ण निर्विचारिता में मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ छोड़ के गणेश बन चुके हैं। तो इस निर्विचारिता स्थिति में श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। Let us listen to Shri Mataji in this state. On the Sahaja Yoga style, the sun line is the right side and the moon is the left side. On the moon line, one can desire but cannot act. Apart from that, on the moon line, if you go too far, it can be destructive. Because if you sit in the house doing nothing, and also these days there's unemployment, say for example, no work, then you start thinking too much. And this thinking is just a desire, energy working out, no action. And without the action, this energy can become very destructive. That is why we find that people, they say that empty mind or is the devil's workshop. Where people do not act, when the action doesn't take place, then it can be quite destructive. So the balance has to be struck. And the balance is that we should desire and act. So a balance has to be struck where you have the Sushumna working out. Now the Sushumna Nadi is the one where one would say is the equator. Is not equator, but is the axis of the Mother Earth. The axis of the Mother Earth is the Sushumna, and that has to act. And when it comes to that axis, it is the one that balances. In the same way, in human beings, the axis is the most important. That's the main principle of life we have got is our axis. We have to stand on our axis. Those who do not stand on their axis, stand more towards the left or towards the life, are capable of complete destruction. Because either they will be destroyed by too much of right side or too much of left side. So our axis has to be properly dealt with. Now those people who do not have a proper axis can have problems of different chakras, of different kind of quality in a person. A person who stretches his axis too much, puts back his head like this, is a person who is very right-sided and creates problem with his ego. And the one who absolutely bends down
like a slavish person also is a person who goes towards his destructiveness. Now there's a big problem between these two types of people, one trying to dominate another, and when they start dominating another person, they actually destroy themselves as well as destroy the ones whom they are dominating. One has to understand that what is the best within a human being is his axis. And everybody has an axis, and one must respect the axis of every person. In Sahaja Yoga, I don't know you by your faces so much. I know you by your chakras, by your sushumna, what sort of a sushumna you have. If you have a deep sushumna, I know you as a deep person. If you have a superficial sushumna, I know you as a person with a very superficial type of a sushumna. And even if you make up something by sort of being very nice or good or talking about Sahaja Yoga or knowing too much about Sahaja Yoga and saying things which will baffle normally anyone as if you are masters of Sahaja Yoga, I know how deep you are. So the depth on the axis is more important than anything else. Your axis has to be very deep. Now you will say that, Mother, the axis is the same as it is. So how can it be deep? So in the axis, as you see, is made in human beings, is like a 3.5 coin paper-like thing. And the inside of it is the Brahmanadi. The Brahmanadi is a very, very small little, we can call a very, very hair-like thing, where only a hair like Kundalini can pass through. But when the person is deep, this Brahmanadi is bigger, and all the rest of them, which are coiled into each other, are smaller. While the people who are not deep, their outside, what you call the foldings, are bigger than the inside small thing. Now such people could be apparently very dynamic, may look very intelligent, may look very smart, may look to be very good looking, or whatever it may be outwardly. But inwardly they are not deep. Inwardly, if they are deep, their whole attitude is beautiful. They are very joy-giving people. They are very joy-giving. And the more, if you meet a person of another kind, he may look joyous, he may try to give you joy, but the joy won't be really that deep. It would be like a joy killing. So it is important for us to make our axis deeper. And that is where we lack the proper assiduity, the proper effort we have to put in. Now some people have automatically very deep axis, and some people have very, very, what should you say, a very constricted type of the axis. This axis has to be grown. Now when you come for my puja and all that, I do expand it, I agree. But it is a temporary thing. To retain it at that point, one has to work at home, in the collective also. One has to work very much at home with meditation. But it should be done seriously. It should not be just a joke, to be frivolous, to be stupid. That's not the way. It should be done very seriously, in the meaning that it is a devoted task you have taken. It's a meditative thing. It's a prayer to God. We can call it, it's a puja to God. Is to be done with that reverence, because reverence is the key of achievement. If you have no reverence about yourself and no reverence of others, then it cannot be done. But first you must have reverence for your own life. What am I doing with my life? Where am I wasting it? Why should I waste it? Why should I be deep? After all, there must be some purpose of my life. Am I serving my purpose? Am I doing that? All these things, if they
pop into your head, then you will understand it's very easy to fight out your ego. Because normally on small, small things people fight. I've seen that in Surge Yoga also, people fight on things like, it's so useless, absolutely useless. To me, it sounds stupid to even mention the way people fight over small things and quarrel. But a deep person, even if he doesn't speak much, even if he doesn't show off much, even if he doesn't sit in the front line, he expresses himself through his depth, because I can work out better through that. So to develop this, one must meditate. Important thing is to meditate every day, every day, every day. You may not eat your food one day, you may not sleep one day, you may not go to your office one day, you may not do anything that you are doing every day, but you must meditate every day. That's an important point to develop the central constricted part into a bigger area. Now, when that happens, that you start developing it, the first thing you will notice about yourself, that you do not care for any comfort. You're not bothered about any material thing. Whatever it is, you are above it. You just don't bother your head. Let it be. You just don't want to put your neck into a thing where you do not belong. You just get out of it and you think that, oh God, this is too much for me. I just don't care for it. So your whole attention now moves inward. When the attention starts moving inward, then it expands more. This is the inner part, which is called as the Brahmanadi, and starts expanding and expanding. This widening comforts you. That's the comforting thing. And that really makes you feel so comfortable in any circumstance, in any position, in any lifestyle. And you do not want to have any other comfort. And this one has to develop through meditative effort. This balance comes through our depth, and that depth has to be improved. Not through just by talking about it, by talking about Surge Yoga, but actually seriously doing meditation, actually seriously doing meditation. Let us observe that all the Shakti Pitas, all the Ekadash Rudra, Virata, each and every point of the Sahasrara is flowing. Sri Mataji, please establish all these vibrations in each and every particle of our body, Sri Mataji. श्री माता जी कृपा कर इस चैतन्य को हमारे हर एक चक्र में, नाड़ी में, जीव कोश में स्थापित करने की कृपा कीजिए। हम बहुत ऊपर है आज,
इधर से हम हमारे सहस्रार को कनेक्ट करेंगे. लेट अस कनेक्ट the Sahasrara from the height where we are now. Today we are in good height. Let us do pranama to Shri Mataji in the Sahasrara. Shri Mataji को सहस्रार में प्रणाम करेंगे. और हम अंदर आएंगे. Let us come in to heart. Heart में हृदय में आएंगे. आज्ञा विशुद्धि अनहत. Let us thank Shri Mataji here. श्री माताजी को धन्यवाद कहेंगे हृदय में. श्री माताजी धन्यवाद माँ. हम कैसे कहें. इतना अच्छी स्तुति, सुंदर स्थिति हमें आपने गणेश बना दिया श्री माताजी. इसी स्थिति में हम हमेशा रह सके ऐसे आशीर्वाद कीजिए. आपके चरण कमलों में, हृदय में, सहस्रार में और सहस्रार के ऊपर बहुत डीप सुषुम्ना में हम हमेशा हमेशा के लिए रहने चाहते हैं श्री माता जी. कृपा कर हमें आशीर्वाद दीजिए. हमारे हृदय में हर पल हर क्षण विराजमान होने की कृपा कीजिए. थैंक यू श्री माता जी फॉर दिस making all of us Ganesha. Please bless this state forever. We want to become your Ganesha mom. Shri Mataji, please bless this state forever. Thank you, Shri Mataji. Thank you very much. Thank you very much. कोटि कोटि प्रणाम. कोटि कोटि प्रणाम. श्री माता जी को प्रणाम करेंगे हृदय में. हृदय में, सहस्रार में और सहस्रार के ऊपर तीनों जगहों में हम दिन भर रहने की कोशिश करेंगे. Let us try to be in heart and in Sahasrara and above the Sahasrara throughout the day. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी to all. Have a निर्मल. सबको जय श्री माता जी.